Hey, welcome to Barbershop Clips. This is a channel where you get to see really cool moments from the barbershop. I know the episodes are really long, but you can come here and enjoy really cool moments in short time as well. I hope you enjoy. Growth कहाँ से आएगी आपकी? More products, more channels. I wanted to ask you this: quick commerce, you are seeing the growth? Yeah, it's amazing. Like I think ये सारा business हमने 6-7 months में ही बनाया है, जो 2 crore का business monthly हो रहा है अब यहाँ पे. On quick com channel. So we started like in June last year probably. And between Blinkit, Instamart, Zepto, which is the biggest? It's also a function of कि कब onboard हुए और कितनी cities खुल गई हैं अब. तो we started with Blinkit सबसे पहले. So now it has become almost like 50% of this comes from Blinkit and remaining 25% from Zepto and Instamart. Same here. Even we are doing quick commerce. बिलीव नहीं करोगे हमारा ट्रिमर बिकता है क्विक कॉमर्स पे. ट्रिमर कौन खरीदता है? बट ट्रिमर बिक रहे हैं. बट यू आर राइट, इवन फॉर अस इट्स रफली 2.5-3 करोड़ का हमारा क्विक कॉमर्स का धंधा है, जिसमें से 40% इज ब्लिंकिट. 35. But habit change I think is definitely there. So people are like whom I know in my friend circle, everyone's ordering from Zepto or Blinkit. People have stopped going to these retail shops. किसके पास time है? Order करो. In fact, like we had a very good repeat rate. So almost 70% of our revenue on our website used to come from repeating customers. Wow. And recently this went down to 60%. And we were amazed at why this is happening. Moving to Blinkit. Moving to Blinkit. And then we were like, ठीक है, channel जहाँ से खरीदना है खरीदो तो अन्वेषण नहीं रहा है. Correct. यहाँ पे थोड़ा महंगा हो जाएगा आपके लिए. But नहीं, actually no. If you are able to become meaningful to Blinkit, your logistics cost plus handling charges plus commission on Blinkit would be lesser than your own logistics cost. Yeah. So end of the day कुछ भी बेचने के लिए 25% देना पड़ता है किसी ना किसी. Right. So that compared to the farmer who ends up giving so much more, right, brands like us are able to do this in much lesser. तो growth आपको कहाँ से, from a channel level कहाँ, like where do you think growth will come from? Like अगर आप double करोगे 6 से 11 कर रहे हो, तो कौन से channel से आएगा आपका mainly? So it's like the most important thing is that the category itself is expanding very quickly. So on the like ghee and oils, cold pressed oils. So on Amazon and on like channels like Blinkit, like it has been growing like 50% year on year. So one is like definitely we'll ride the wave of category expansion, and also within the category we'll try and expand our market share. So actually these categories are quite deep. Ghee is 20,000 crores, out of which 8-10 is premium ghee, but still it is expanding. Same oil is also 1 lakh crores. So these are very big markets. So if we were having this discussion that should we enter into more categories, or we should. So we took a hard call that again we have to start saying no. So we don't want to do more products. We want to become the best company in oils and ghee. That is amazingly sharp, yaar. That is amazingly sharp. So I was going to ask you कि तुम like आप लोग दूध, मिठाई, very it's very tempting, right? To try anything. किया है सब करके ठीक है. Actually वो 1 साल पहले ना हमने प्रोडक्ट्स भी आधा प्रोडक्ट सेट बंद कर दिया था. तो आपको सिर्फ घी और ऑयल बताया हमने, बट हमने स्पाइसेस भी लॉन्च किए थे, स्वीट्स भी लॉन्च किए थे, सुपर फूड्स भी लॉन्च किए थे. एंड वो सब बर्निंग कैटेगरीज थी. मतलब वहाँ पे अगेन मतलब अच्छे से कस्टमर को समझ पाना, प्रोडक्ट को समझ पाना, सप्लाई चेन वैसी बना देना. हमें लगता था कि नए प्रोडक्ट लॉन्च करना बहुत आसान है, मतलब ऐसे. और वो भी टेम्पटिंग हो जाता है कि हर प्रोडक्ट से आपको 5-10 लाख महीने का मिल जाएगा फटाफट. राइट. आपको लगता है कि सही है, ग्रोथ हो रहा है 6 करोड़ से 6.5, 6.5 से 7. लाइक एनपीडी बेस्ड ग्रोथ इज गुड. लाइक पीपल थिंक इट्स गुड ग्रोथ, बट इट्स नॉट, बिकॉज you end up like the organizational focus becomes completely haywire. Right. And brand dilution भी हो जाता है. Food में तो like each product is a different supply chain. Like someone is at a 6-month shelf life, someone is at a 12-month. Like our oils and ghee at 12-month shelf life. Spices was 6 months, and we also launched a dry fruit mithai, which was at a 60-day shelf life. So managing all those, creating inventory, replicating them, everything becomes a challenge. I think. आप अपने को क्या बोला? Like आप तो जेई क्लियर किए हो. लोग बोलते हैं कि जितनी ज्यादा कठिन चीज होती है उतना ज्यादा रिवॉर्ड होता है एट द एंड ऑफ द डे. राइट. बट आई समटाइम्स फील इन बिजनेस बिल्डिंग उल्टा होता है. लाइक तुम जितना सिंप्लीफाई कर पाते हो बिजनेस को उतना अच्छा. डोंट ट्राई टू सॉल्व वेरी हार्ड प्रॉब्लम्स. सॉल्व इजियर प्रॉब्लम बट डू देम रियली वेल एंड गो डीप. विल एंड अप क्रिएटिंग अ लॉट मोर वैल्यू. I'll tell you, like we actually launched sweets और हमें घी को सैंपल करना था, और घी को ऐसे सैंपल कराना थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे. तो हमने एक मिठाई बनवाई जो शुगर फ्री मिठाई थी. सिर्फ उसमें डेट्स थे, हमारा घी था और नट्स था. और वो मिठाई रॉक मतलब बहुत ही उसने मचाई दिया. मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन टाटा जो ताज है बेसिकली, ताज बेसिकली गिफ्ट्स टू ऑल देयर प्रीमियम बेसिकली कस्टमर्स, उसमें हमारी वो 250 ग्राम की एक मिठाई का पैकेट जाता था. एंड वी यूज्ड टू डू सम 60-70 lakhs का मंथली सेल्स फ्रॉम दैट मिठाई. और फेस्टिव सीजन में तो मचा ही देता था. बट अगेन इट हैड अ 6 month ऑफ शेल्फ लाइफ, 60 days ऑफ शेल्फ लाइफ, ड्यू टू विच सप्लाई चेन मैनेज करना, बार बार वेस्टेज हो जाते थे. तो अगेन वी टुक अ हार्ड कॉल कि मिठाई जब लॉन्च करेंगे तो अच्छे से लॉन्च
लॉन्च करेंगे, प्रॉपर सप्लाई चेन बिल्ड करके लॉन्च करेंगे. अभी हमारे सारे सिस्टम, सारा टेक घी और ऑयल्स के हिसाब से बना हुआ है. तो अगेन फोकसिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग राइट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वी लर्न एंड आई थिंक हमने सारी कैटेगरी बंद किया और रेवेन्यू डबल हो गया मतलब ऐसे. That's amazing. These are not easy calls. Yeah, it was 70 very लाख महीने का धंधा कम करना when you are only 2.5 crores, that would have been like 20-25% of your business. Yeah. To say we won't do this, it's kudos to you guys. Like I think, telling you from personal experience, it's very hard to shut down revenue, high revenue stuff. Understood. So ghee oil, so let me understand this. Right? You're at roughly 1% EBITDA right now. Yeah. As of January, you want to double the business and 6x the EBITDA, which is great. You're focusing on ghee and oil as core, and you're extremely tech enabled on this. You're able to find micro entrepreneurs and track quality back, which is what I think is resulting in your consumers also loving you. Right. That is showing in your repeat rates. That is showing in your growth across all the channels. And it's good that you have cash management friendly channels like D2C, Amazon and quick commerce. It's good. ये 6 से 11 अगर आप इसी मेरे हिसाब से इसी पोर्टफोलियो में करोगे in terms of split, it's good. Yeah. Because हमारे साथ क्या हुआ है, for example, we reached 15 to 20% market share on e-commerce at some point. Now like अब इससे ज़्यादा market share नहीं ले सकते. Now growth will have to be about going into other channels. तो हम लोग दुकानों में गए etc. Man, that's totally different ball game for us. तो इसमें तो हमें लगता है कि 15-20 करोड़ का मंथली रेवेन्यू थ्रू दीज ऑनलाइन चैनल्स ही बन सकता है. इतना स्कोप है अभी इसमें अभी आगे. Is that big the depth? हाँ, yes. Wow. एंड लाइक दिस 12 करोड़ भी जो हम बोल रहे हैं कंजर्वेटिव नंबर है, बट हमारी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई है. मतलब एज इन जो हमने चैनल्स के साथ प्लान्स बना रखे हैं फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, एंड इफ थिंग्स गोज वेल आई थिंक थिंग्स कैन बिकम वेरी गुड बिकॉज दीज चैनल्स आर क्वाइट डीप in this category. Understood. And you know, as a product also, this category is which has in general very high repeat. अगर आपको एक बार चमक गया घी तो आप यही खरीदोगे बार-बार. Sticky है यार ये. तो बहुत सारी बात है ना. टेस्ट में वही है. मतलब see think about it. ये अपन D2C और ब्रांड ये सब बोलते हैं, लेकिन फूड में 500 करोड़ से ऊपर का ब्रांड बना है कोई in the last 10 years, जो भी आप D2C कॉमर्स I think उसे Licious ही है जो कि वो भी मतलब हाँ, you're right. But Licious is not a food brand. It's a meat brand. It's a retail meat brand. It's not a food brand. Right. Ghee, oil, biscuits, chocolates, health food, जो भी कोई भी. I think Lahori Jeera, for example, is now 350 crores or so. That's a drink brand. Yeah. Paper Boat has become 600 crores, which is again a beverage brand. But compared to beauty personal care, where a lot of brands, fashion, where people have hit 500 crores, etc. Food and beverages has become a little harder. I feel because taste is a lot more sensitive. People can experiment with fashion, people experiment with creams, razors, but something that goes inside your mouth and you enjoy, वो उसमें थोड़ा difficult है, but once you're in, you're in. I think sticky बहुत है category. Right. So it's difficult to convert, but अगर convert हो गया तो very sticky, very sticky.